एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स फॉर एमएसएमईज, क्योंकि ये छोटी संस्थाएं होती हैं पर इनकी भी अब प्रोफेशनल नेटवर्क्स हैं, तो उनको टैप करना और उनको इंसेंटिव देना ज़रूरी होगा अप्रेंटिसशिप को बढ़ाने के लिए। नैप्स की ब्रांडिंग भी अगर हम कुछ naukri.com जैसी इस तरह की कर सकते हैं फॉर अप्रेंटिसशिप, I think a branding and repositioning of NAPS would be great. Enhancing of stipend. I think in some, at least for students who have to relocate themselves, I think, or some kind of facilities, I think those are would be important. Increasing female participation, again, some kind of incentives or amenities like accommodation and extra leave and female safety. I think that those will be important considerations. और पीडब्ल्यूडी पार्टिसिपेशन के लिए दिव्यांग लोगों के लिए रैम्प्स, एलिवेटर्स, एक्सेसिबल रेस्ट रूम्स, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, एंड वर्किंग विद द ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज who can facilitate partnership with disability organizations to find connect with industries, and some kind of incentives to employers, or at least their recognition in the social space, to those who consciously employ persons with disabilities. I think that will go a long way. तो मैंने संक्षिप्त में जो इस स्लाइड में बताया हिंदी में कि आपको इंडस्ट्री क्लस्टर्स के लिए, एमएसएमईज के लिए कुछ इंसेंटिव्स, प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है, और महिलाओं के लिए और दिव्यांग के लिए विशेष प्रयास करने की ज़रूरत है. Better tech interface, because we are sitting on a portal, and portal, that is why, because it will be a technology driven disbursement system, which will be transparent. My first suggestion and request to Government of India would be that many states like Maharashtra and I think recently UP, Gujarat have also announced monetary schemes, additional monetary component to NAPS. So I would request that if the portal could build in a feature enabling states to do their additional component, because the beneficiaries are the same, and it will avoid duplication of efforts in accounting. That is one. Secondly, also facilitate a feature to generate contracts up to maximum level. Means if our state government has extended the apprenticeship limit to 25% of the establishment, we should be able to create that on the portal itself. Integration of CTS, the craftsman training scheme, which is through NCVT MIS portal, and apprentices, which is through your apprenticeship portal. I think that is very important, because we are missing out that our ITI, I'm told that there are 15,000 ITIs across the country, creating, training nearly 15 lakhs youth every year. Now, I think when they clear their CTS exam, there should be auto registration on Apprenticeship India portal. इससे हमको लाखों युवा जो प्रॉपरली प्रशिक्षित हुए हैं आईटीआईज में पूरे देश में, उनको अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलेगा, और इंडस्ट्री को एक रेडी डेटाबेस मिलेगा कि उनको वो बच्चे किस क्षेत्र में कहाँ से पिक करने हैं. I think that kind of, because today that data is not in public domain. I think that is very, very important, I would say. Providing access to state directorate, जो हमारी BTRIs और डायरेक्टोरेट्स हैं, आज ऑप्शनल ट्रेड्स का उनको एक्सेस नहीं है डेटा का, उनको देना ये बहुत ज़रूरी है. और उनको भी ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट, जो औद्योगिक स्थापना होती है, जो ट्रेनी होता है, और जो हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या बीटीआरआईज और हमारी स्टेट एजेंसी है, उनको उनको इस अग्रीमेंट का हिस्सा बनाना चाहिए. क्योंकि कई बार अगर पोर्टल पे डायरेक्टली ऑटो रजिस्ट्रेशन और सैंक्शन होती है, तो कई जगह में ऐसा पाया गया है कि वो औद्योगिक संस्था में सबकी बात नहीं कर रही, वहां पे फर्स्ट रिपोर्टिंग होती है और उनके पास एक्चुअली फिजिकली उतने एम्प्लॉयज भी नहीं होते और उनके पास ट्रेनिंग की सुविधा भी नहीं होती. तो इस तरह की थोड़ा सा एक मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स के लिए करना जरूरी है, ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट एजेंसीज. एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर स्टेट अप्रेंटिसशिप मशीनरी. आई थिंक इसके महत्व को समझने के लिए आप लोग काफी वर्कशॉप्स कर रहे हैं. 250 में से महाराष्ट्र में भी 10 वर्कशॉप्स का टारगेट था, 7 हुई हैं, बाकी हमने बहुत सारी हमारे स्तर पे ली है. लेकिन इस चीज को बढ़ाने की जरूरत है. आई वुड नॉट गो इन टू दिस बिकॉज आई सेंड यू सेपरेटली, बट
there are a lot of suggestions for portal improvement, which you can look at data reconciliation and certain filters that can be introduced. You can have a multilingual user interface. You could also think of a apprenticeship training, tracking mechanisms and a grievance redressal mechanism as you go on to beauty. That will be important. I would just like to show some pictures on activities at job fair, which we do it not only for regular jobs, but connecting the apprenticeship, potential apprenticeship to industry people. You can see different regions, Aurangabad, Amravati division. This is one of the speakers talked about social inclusion. So we had Tata Electronic Counseling and Orientation in Kinwat region, Nanded region, which is a tribal region. So I'm just showing you some examples. We had 2,000 girls who were picked up by Tata Group in this Mela. We also target specifically women ITIs for placements and apprenticeship. So आई वुड नाउ लाइक टू टेक यू थ्रू, तो हमने महिलाओं के लिए रोजगार मेला में और जो आदिवासी और दुर्गम रूरल एरियाज हैं और पूरे राज्य में हमने इस तरह के इंडस्ट्री कनेक्ट के लिए हमने प्रयास किया है। आप देखेंगे अभी हमारी बात हो रही थी डिग्निटी देने की, कि अगर कोई फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ इन यशोगाथाओं से कि हमारे बच्चे कितना आगे इन ट्रेड्स को कम नहीं समझना चाहिए। क्रिस्टो की कहानी है, उन्होंने फिटर ट्रेड किया था डॉन बॉस्को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, और आज वो एक्सप्रो नॉर्थ सी लिमिटेड में वो फॉरेन कंपनी है और उसमें 3 लाख सुपरवाइजर के पद पे कमा रहे हैं। उससे पहले भी उन्होंने एक इंटरनेशनल मल्टीनेशनल में काम किया था। ये हमारे जैसे जो हमारे सक्सेसफुल एलमनाई होते हैं उनके बारे में भी हम बता सकते हैं कैंडिडेट्स को मोटिवेट करने के लिए। जैसे प्रोफेसर सुनील मोरे हैं, ये हमारे गवर्नमेंट आईटीआई चांदवड़ के इलेक्ट्रिशियन के ट्रेड के स्टूडेंट थे और आज वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई करके अपना और डिग्री कंप्लीट किया और उसके बाद वो प्रोफेसर बने। तो और उन्होंने सैमसोनाइट और गोंदिया वगैरह में सब जगह अप्रेंटिसशिप की है। मधुकर सूर्यवंशी जो हैं, उन्होंने आईटीआई धूले में टर्नर का काम किया। अभी वो 1.5 लाख से ज्यादा उनकी तनख्वाह है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में उन्होंने अप्रेंटिसशिप की और आज वो सीनियर मैनेजर एचआर रिलेशंस टाटा ग्रुप में है। तो अगर मैं ये सब स्टोरीज इसलिए बता रही हूँ कि कितना पोटेंशियल है हमारे इन वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, और किसी को भी, सब युवा जो यहाँ जुड़े हुए हैं हमारे से, उनको ये समझना चाहिए कि ये कितना करियर प्रोग्रेशन है। वैसे ही ऑरवेल इलेक्ट्रिशियन है जो आज 1.25 लाख रॉयल कैरिबियन शिपिंग में कमा रहे हैं। We are running short of time. No, these are great examples. Yeah, I have come to, sir. I was given the time at 12:30. I was, yeah. So, yes, I'm finishing, sir. And फिर आकाश भी, आप देखिए नासिक में फिटर थे जो अभी उनकी खुद की 2 करोड़ की उनकी खुद का टर्नओवर है। तो ये हमारे कुछ बच्चे, ये लास्ट स्लाइड है मेरी, ये बच्चे मयूर, अभी इनको जगुआर लैंड रोवर स्विट्जरलैंड में लिया गया है आईटीआई उस्मानाबाद के। हमारे 34 बच्चे इस साल जापान और जर्मनी के पैकेज पे जा रहे हैं। हमारे 60 आईटीआई लातूर के बच्चे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में जा रहे हैं। तो मैं आपके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत जल्दी संक्षिप्त में अपनी इंफॉर्मेशन दी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक्स सो मच, थैंक्स श्रीमती मनीषा वर्मा जी। और महाराष्ट्र का जो ये एग्जाम्पल है उससे देश के बाकी सभी युवाओं को सीखने का बहुत बड़ा मौका मिला होगा। और अब मैं बहुत तुरंत ही आगे बढ़ती हूँ अपने अगले एस्टीम्ड पैनलिस्ट के पास, जो है श्री आशुतोष गुप्ता जी। श्री आशुतोष गुप्ता जी हैं कंट्री मैनेजर लिंक्डइन के। एंड श्री आशुतोष गुप्ता जी ने अपने साथ जो है वो कम से कम 2 दशकों का एक्सपीरियंस है इनके पास इंटरनेट एंड आईटी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज का। एंड ही हैज earlier worked in big giants like Google, Cognizant and Infosys. He joined LinkedIn in 2013 to lead LinkedIn
Marketing Solutions (LMS) in India, where he scaled the enterprises businesses. In 2016, he moved to Singapore to build the LMS online sales organization for Asia Pacific and China. So most welcome, Shri Ashutosh Gupta ji. Let us have insight from you, please. Yeah. Thank you, Sonal ji. Good afternoon, everybody. Respected chairman, esteemed panelists. It's a pleasure and it's a privilege and honor to be here today. LinkedIn एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जॉब सीकर्स आते हैं, जहाँ कंपनीज उनको जॉब सीकर्स को जॉब्स देने के लिए आते हैं. तो इट्स लाइक अ मार्केट प्लेस वेयर पीपल कम टुगेदर. वाई हम लोग यहाँ पे बहुत इंटरेस्टेड हैं कि स्किल्स हमारा फोकस है. हम एज अ प्लेटफॉर्म वी ऑलवेज फोकस ऑन स्किल्स. सो यूथ इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये हमारा डिस्कशन है. युवा लोग हमारे फ्यूचर हैं. And we have a strategic advantage over other countries globally, which is namely demographic dividend. We have the might and the power of the youth for us. So to take advantage of this dividend, Honorable Prime Minister has laid down the strategic vision in the budget and the thrust on skilling, reskilling and upskilling. हमने आज सुबह भी सुना, उन्होंने बोला the importance of skilling and reskilling, the importance of learning. So मैं सब लोग जो सुन रहे हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि स्किल्स इज द न्यू करेंसी. स्किल्स एक वो ऐसी करेंसी है जो आपको बहुत दूर तक लेके जाती है. एंड स्किल्स लास्ट फॉर एवर. सो स्किल्स इम्पॉर्टेंट हैं कि हम स्किल्स सीखते रहें, हम लर्निंग पे ध्यान रखें ताकि हमारे स्किल्स रिफ्रेश होते रहें. World outside is changing very fast, and I'll give you some data points which are quite interesting because of the technology disruptions, things are moving very fast and they're very dynamic. According to our LinkedIn data, skills for a job in India have changed by around 30% since 2015 and now are expected to change by 48% by 2025. So मैं फिर से बोलूँगा और हिंदी में बोलूँगा, जो आप आज जॉब करें, जो उसके लिए स्किल्स चाहिए, आधे स्किल्स वो चेंज हो जाएंगे बाय 2025. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कीप रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग, क्योंकि जो आज हमें आता है, जो हम स्किल्स हमने सीखे हैं, माइट नॉट बी वेरी रेलिवेंट इन द फ्यूचर, राइट? सो हेंस लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट. Continuous learning, making learning a focus always is very very important, and to build new skills which might be required in the future. एक एस्टीम पैनलिस्ट ने और एक बात बोली जो मैं फिर से री एम्फेसाइज करना चाहता हूँ. हम जब भी स्किल्स के बारे में सोचते हैं, हम ज़्यादातर हार्ड स्किल्स के बारे में सोचते हैं, बट सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. हमने ये देखा है, क्योंकि हमारे पास ये जितनी जॉब्स आती हैं प्लेटफॉर्म पे, हम उन्हें एनालाइज करते हैं. हमने देखा है कि काफ़ी सारे सॉफ्ट स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, वर्किंग इन अ टीम्स is very very important, right? So not only hard skills but even learning soft skills is very very important. So learning is the focus and India is embracing learning very very strongly. हमारा LinkedIn डेटा दिखाता है कि जो LinkedIn इंडिया के मेंबर्स हैं इंडिया में, they spent over 4.6 million hours on LinkedIn learning in 2022. 4.6 million hours on LinkedIn learning. It was 2x the average of the global countries on LinkedIn. So Indian members are already embracing learning, which is very heartening to see, and we have a lot more to do. आज सुबह ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात पे एम्फेसिस डाला और रीट्रेट किया कि वी नीड टू कंटिन्यूसली लर्न एंड स्किल to make ourselves future ready. Apprenticeships can be highly effective in promoting skill development by providing opportunities to learn and apply new skills, thereby increasing their potential to secure employment despite having no prior work experience. And this whole idea of apprenticeship and not having prior work experience very very closely ties into the focus of LinkedIn globally and in India, which is skills first. So we are committed to build a skills first economy जहाँ पे skills, having relevant employable skills, demonstration of this of those skills get you a job rather than the past work experience or the pedigree of your work experience. So I think, as I said, this very deeply ties into LinkedIn's vision of creating economic opportunity for every member of the global workforce. I'll keep it short because I think the deliberation and discussions will be far more important.
but it's a great pleasure to be here. We are committed to working with Government of India and Skills Ministry to realize the vision of being skills capital of the world. Thank you for having me here. Thank you. Thank you for keeping it very short and very crisp, आशुतोष गुप्ता जी. And जो सुबह हम सभी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में सुना था कि स्किलिंग के साथ अपस्किलिंग और रीस्किलिंग की बहुत जरूरत है, उसको आपने फिर से फोकस किया है. और स्किल फर्स्ट इकोनॉमी बनाने के लिए जो आपने एक ध्येय या निर्देश दिया है, वो भी हमारे लिए एक बड़ा अच्छा सजेशन है. सो थैंक यू अगेन, थैंक यू. नाउ मैं अब फिर से इनवाइट करूंगी डॉक्टर विकास चंद्रा जी को, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना उद्बोधन अगले 2 से 3 मिनट में अगर सिर्फ आप जो कर रहे हैं वो बता के पूरा कर दें तो हम प्रश्न लेने में सक्षम रहेंगे. जरूर जी. Thank you. So I hope now I am audible well. Yes, you are quite audible and video also is fine. Please. Thank you. To continue with my discussion, that as a ArcelorMittal Nippon Steel, first we are strengthening the local ITIs and strengthening there in terms of the course curriculum development. Also, we have started dual system trainings which are relevant to the industry to get the skill force. We have set up a center for excellence, and this is one. Other part was the upskilling part. So we have also set up a skill academy in our as one of the HR initiatives, where we regularly do the upskilling of the existing manpower, going beyond at a futuristic step. As you know, the Prime Minister of India has a vision to have a 300 MT steel production in next 9 to 10 years. So the quantum of the skilled manpower is required is huge, and to align with this mission and taking this as a priority initiatives, we have planned to set up a skill university in Gujarat, and we are working on that. So we have set up a transitory campus at IIT Gandhinagar. So this will be a skill university 4.0, and being a global presence, we will be collaborating with global potential partners. So, and focusing on the futuristic vocations like smart manufacturing, smart automotive system, smart material manufacturing. So we have onboarded ITE Singapore. We have also collaborated with Colorado School of Mines, universities of US. So these are some of the global partnerships that we have formed. So what, as a global player, we as an industry, we can help in bringing the eminent global institute where the student can benefit from exchange programs and the curriculum co-development in new areas. And so this is our future initiatives. So we and to have also the social inclusion, we are through CSI initiatives, we have partnered with National Skill Development Corporation, where we are providing training on digital trade, and till now we have provided 800 local youths on different vocations, which has achieved a 70% placement campus, and we aim to in another couple of years reach out to 5,000 youths. So these are some of the initiatives that we as ArcelorMittal Nippon Steel are taking, and as the industry has a very major role, and we are the, as an industry, it needs to collaborate and to take the partner with the government, and ArcelorMittal Nippon is will be very will be prompt in partnering with the mission with the government in whatever ways, and we will take this journey together. So I will keep my deliberation short. So thank you for inviting us for this in this team panelist and for this webinar. Thank you. थैंक यू डॉक्टर विकास चंद्रा जी. और आपने जिस तरह के कोलैबोरेशन बताए हैं आर्सलर मित्तल निपन स्टील की तरफ से, खास तौर पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, स्किल एकेडमी, पार्टनरिंग विद आईआईटी गांधीनगर एंड डेवलपिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, आई थिंक
Honorable Chairman Sir has also kind of noted this, and this will be a good message to go for many such giants like you to partner with the centers of academic importance. So, sir, now just for knowledge of the Honorable Chairperson and the panelists, we are now closing the panel discussion. We have completed and we have got very great insights from all the panelists. And sir, if it is fine, do we open the questions now? Because I'm getting lot of messages and lot of chat boxes that अब हमारे को भी कुछ सवाल पूछने हैं और जानना है डिटेल में पैनलिस्ट के बारे में. So Yes, Kunalji, I think the entire panel is eager to listen to the questions and answer them. जी सर. सर सबसे पहले मुझे चैट बॉक्स में से मिले हैं सर, इनके कई बार आ चुके हैं. श्री दीपक जी, वाइस प्रेसिडेंट शाही एक्सपोर्ट, ये इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं सर, और ये हमसे जुड़ना चाह रहे हैं. जरा दीपक जी को प्लीज आप दीपक जी को ज्वाइन करिए. नहीं है अभी. अच्छा, श्री अच्युतानंद जी हैं वेदांता से, कालाहांडी उड़ीसा. उनके भी चैट बॉक्सेस में आए थे. दीपक जी, उन्होंने बोला है प्लीज अनम्यूट है, उनको अनम्यूट करिए दीपक जी को. आप कुर्सी लेके उनके बगल में ही बैठ जाएं प्लीज, सो दैट वो रियल टाइम में चेक होता रहे कौन कौन है. आप दीपक जी को अनम्यूट करें. दीपक जी. हेलो हेलो हेलो. हाँ यस दीपक जी, शाही एक्सपोर्ट्स में से दीपक जी आप जुड़ चुके हैं. Yes, yes, yes. प्लीज. So good afternoon to all of you. रिक्वेस्ट है अपने सवाल शॉर्ट में पूछिए जिससे Yes, कि yes. पैनलिस्ट. Yes, yes, 100%. It has been a great experience listening to all the respected panelists. My question is to Shri Rajesh Agarwal ji. Sir, I got a great insights about the DBT system, what you had actually conceptualized and implemented, and I think it's a great move. And we all believe that DBT is considered as the game changer in the apprentice ecosystem. So maybe if you can just help us to understand it at a bit deeper level, it will be great. Thanks, Deepak ji. First of all, I think DBT is one of the most important pillar of the transparency and corruption-free governance agenda of the government. This has been something on the forefront for last 7-8 years through the JAM Trinity, where DBT has been rolled out in multiple facets, and whichever schemes has seen DBT, it has always led to better confidence building, more effective implementation of the programs, and more confidence in the people who are the real beneficiaries of the program. By bringing in DBT in the apprenticeship ecosystem also, I think we are moving in that direction, wherein there will be a lot of confidence building in terms of getting their stipends in time. Industries will also be using the DBT ecosystem for moving their stipends. It will also lead to some amount of financial and digital inclusion of this trainees also, because when you use portals, when you interact on a digital platform, when you use the DBT as a mechanism, there's some amount of information, some amount of education also willy-nilly takes place of the people. And three, I think this is also in sync with the overall agenda of the government, where it's aligning the entire interface of the government to the apprenticeship ecosystem, whether it's to the trainee or to the industry through a digital framework. I think DBT is the next was definitely the next logical step. I think I understand the ministry has already done a good pilot around DBT for last 6-8 months, wherein more than 1.5 lakh apprentices have benefited out of it. More than 23 crore rupees have already been transferred, which is already a testimony to the fact that this portal and this whole mechanism is working fine. I think this entire effort now, the entire program which will be implemented under DBT, will give a lot of confidence both to the trainee industry and the government that the program is on the path, and whatever the apprenticeship is offering in terms of stipend is completely true and on time. So I think it's a great move in the right direction. सर थैंक यू सर. ये इस सवाल के सामने आपने जो विस्तृत रूप से जवाब दिया है सर, उससे मुझे लगता है कि ये क्लैरिटी भी आएगी. और हाँ सर, हमने जुलाई 2022 से
डीबीटी के लिए पोर्टल को लाइव करके उसकी टेस्टिंग भी की है, और जो आपने आंकड़े बताए हैं उसकी के हिसाब से इसमें हमें संतोषकारक नतीजे भी प्राप्त हुए हैं। अब सर हमें दूसरा सवाल दूसरे हमें मिल रहे हैं जो सवाल कर रहे हैं श्री अच्युतानंद जी फ्रॉम कालाहांडी उड़ीसा। हेलो। अच्युतानंद जी आप हमसे जुड़े हैं जी, आइए। Respected chairman and esteemed panelist, my question is how can apprenticeship be made aspirational for youth? ये एक जनरल सा सवाल है, क्योंकि इसका जवाब इंडस्ट्रीज भी दे सकती हैं, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स, चेयरमैन सर, हाउ कैन एकेडमिया कंट्रीब्यूट फॉर दिस? तो सर आई वुड रिक्वेस्ट चेयरमैन सर अगर इसका एक जवाब दिया जाए जी। No, this is an important question. How can we make it aspirational? Often we think that after apprenticeship, we end up in a job and after that there is no future. But using the national education policy as a roadmap now, we are providing a lot of flexibility and choices and opportunities to the students. Even we are going to consider the prior learning experience, and using the academic bank of credits, students can accumulate these credits in the ABC, and once these credits correspond to certain level, students can enter laterally in any educational program. We have seen from the example of Manisha ji, who spoke earlier, where some of the apprentices have become assistant professors and they have gone to the higher positions. So these opportunities are part of our national education policy, and apprenticeship will become an aspirational profession for many of the youth. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स ये बहुत ही विस्तृत से बताने के लिए सर। और अब हमें सर चैट बॉक्स में से हमें सर सतीश पवार जी हैं, चेयरमैन युवा शक्ति फाउंडेशन। सतीश पवार जी आप हमसे जुड़ पाए हैं क्या? सतीश पवार जी, इनकी तरफ से भी हमें एक रिक्वेस्ट आई थी। सतीश पवार जी, चेयरमैन युवा शक्ति फाउंडेशन, इज ही can we connect with him? Yeah, I'm सतीश जी आपके पीछे कुछ बैकग्राउंड नॉइज है, या तो उसको बंद कर दीजिए प्लीज। yes, I'm audible. यस यू आर ऑडिबल, लेकिन आपके पीछे भी कुछ बैकग्राउंड नॉइज, और भी तो कोई अनम्यूटेड नहीं है? नहीं आपके पीछे कुछ मैडम, बैकग्राउंड नॉइजेस है सतीश जी को अभी। नो मैडम यू म्यूट हिम, सतीश Hello. पवार पीछे बैकग्राउंड। हाँ यस, अब ठीक है सतीश जी, बताइए। Basically, madam, MSME is largest employment generation sector after agriculture, and as we are aware that apart from service sector, MSME has their own set of challenges related to operation and all. So my question is, apart from DBT, what flexibility has been provided to establishment, especially service sector and MSME industries, to encourage the apprenticeship training? सर ये फिर इस जवाब के लिए शायद मैं राजेश अग्रवाल जी सर आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा इंसाइट आप दें, एंड अदरवाइज आल्सो इट इज ओपन, ये इसमें जो इंडस्ट्री कर रही है वो भी थोड़ा इनपुट दे सकते हैं, इनपुट स्टेट से भी आ सकते हैं सर। I think apprenticeship training in India traditionally was largely in manufacturing sector, but to open it up for services sector, I think the concept जो optional trade का इन्हीं के लिए आया था। ऑप्शनल ट्रेड क्योंकि हमारे पहले जितने भी ट्रेड्स कोर्सेज थे, अराउंड 200 और डिजिग्नेटेड ट्रेड्स जिसको हम लोग कहते थे, जो के ITI से जुड़े थे, वो सारे कोर्सेज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े थे, क्योंकि पहले समझा जाता था शायद अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्री सेक्टर ओनली। पर इंडिया में जिस तरह से सर्विसेज की ग्रोथ हुई है और जिस तरह से सर्विसेज की ग्रोथ अक्रॉस द वर्ल्ड हुई और सर्विस सेक्टर अब ग्रेजुअली मेजर इकोनॉमीज का एक मेजर पार्ट बन रहा है, तो इसमें यह पाया गया कि सर्विसेज सेक्टर में वेदर वो रिटेल हो, हॉस्पिटैलिटी हो, टूरिज्म हो, ब्यूटी एंड वेलनेस हो, सभी जगह स्किल ट्रेनिंग की आवश्यकता है। और इसमें काफी बड़ी कंट्रीज ने भी इसको शुरुआत किया था। यूके वगैरह में आप देखेंगे सर्विस सेक्टर में काफी अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा दिया गया। उसी को
अडॉप्ट करने के लिए 2014 में ऑप्शनल ट्रेड की व्यवस्था की गई, ताकि ऑप्शनल ट्रेड के माध्यम से इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्री नए कोर्सेज बना पाए, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है फ्यूचर इंडस्ट्री के लिए, उसके आधार पे कोर्सेज का गठन कर पाए। सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस किया गया, जैसे आशुतोष जी ने बताया, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में खासकर इफ यू हैव टू ग्रो, इफ यू टू राइज, इट इज द लाइफ स्किल्स एंड द सॉफ्ट स्किल्स विच आर इंपॉर्टेंट। उसको भी इनके साथ जोड़ा गया एक बेसिक ट्रेनिंग के तौर पे, ताकि आप कोई भी ऑप्शनल ट्रेड देखेंगे जो कि सर्विस सेक्टर से जुड़ा है, तो इसमें सॉफ्ट स्किल्स के कंपोनेंट्स भी जरूर होंगे। तो इसको काफी रिलैक्स किया गया। और इसके साथ साथ एक सेक्टर स्किल काउंसिल, जो कि हर सेक्टर से एक इंडस्ट्री काउंसिल थी, उसको अप्रेंटिसशिप इकोसिस्टम से जोड़ा गया, ताकि सेक्टर स्किल काउंसिल इंडस्ट्री के साथ काम करके ऑप्शनल ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ सके, सर्विस सेक्टर में भी अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा दे सके। और ये शुरुआत जो कि 2016-17 में हुई थी, मुझे लगता है अब काफी आगे बढ़ चुकी है, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज भी बन चुके हैं और बहुत सारे बच्चे, मुझे जहां तक ज्ञात है, इस साल 4 लाख से ज्यादा लोग ऑप्शनल ट्रेड के अंदर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इस वर्ष में, वित्तीय वर्ष में ले रहे हैं। एक अच्छा नंबर है और ये एक अच्छी प्रगति दिखाई दे रही है। सर, ऑप्शनल ट्रेड में करीब 60% जो अप्रेंटिसेस एंगेज हो रहे हैं, उसमें से 60% का नंबर, क्लोज टू 60% दे आर गेटिंग एब्जॉर्ब फॉर द ओटी ऑप्शनल ट्रेड। और सबसे बड़ा फायदा ये है सर कि ऑप्शनल ट्रेड के जो कोर्स करिकुलम या कोर्स या जो जॉब रोल्स होते हैं, वो इंडस्ट्री स्वयं ही बनाता है। तो ये एक जो होता है कि दैट द फ्लेक्सिबिलिटी विच गोज टू द इंडस्ट्री, दैट इज अ ग्रेट हेल्प, कि वो खुद ही बनाता है, खुद ही उसको उसको असेस करके सर्टिफाई करना होता है। तो एक कहा जाए कि एक ही जगह पे उसका सारा काम अपने स्वयं से हो जा रहा है, तो इससे बड़ा फैसिलिटेशन तो और क्या विचारा जा सकता है। सो थैंक यू सर। अब हम सर खास तौर पे यहाँ सर्विसेज सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर की इतनी बातें हुई, तो एक सर, और जैसे बताया गया, एनएसडीसी के पास करीब 37 जितनी सेक्टर स्किल काउंसिल है, तो उन्हीं के एक बड़े इंपॉर्टेंट मेंबरान है सर, श्री सौम्या रंजन जी। He is the CEO of Banking and Financial Services and Insurance BFSI सेक्टर के फॉर दी सेक्टर स्किल काउंसिल। तो सौम्या रंजन जी, आप क्या जुड़ चुके हैं? थैंक यू सुरल मैडम। मैं सौम्या बोल रहा हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल आ रही है, एकदम क्लियर आवाज आ रही है सौम्या जी। Thank you to you, and this was a great to listen to all the panelists with respect to apprentice. So my question to all of you is that what are the steps that has been taken by the government now to increase the uptake of apprenticeship training from by the industry or the establishments? इसका जवाब स्टेट से भी आ सकता है मैम। आपने तो अपने बहुत इलेबोरेट प्रेजेंटेशन में बताया। इसके अलावा जो इंडस्ट्री खुद इसमें जुड़ी हुई है, मे बी राहुल भारती जी, आप अगर अपने जो आपने ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए हुए हैं, उसमें आप स्वयं से अगर कोई स्टाइपेंड देते हैं या आप जो करते हैं, आप उन चीजों को भी थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं। Sure. We have a good amount of stipend for our industries. And we have about 4,500 apprenticeship trainings every year. हर बार करते हैं। उनका प्रिसाइज क्वेश्चन मेरे से मिस हुआ है, एक बार अगर दोबारा उनका प्रिसाइज क्वेश्चन तो यही है कि हमने क्या स्टेप्स लिए हैं, what steps have been taken by government to increase the uptake of apprentices whether in industry or establishment. लेकिन सरकार के काफी स्टेप्स ऑलरेडी राजेश अग्रवाल सर बता चुके हैं। तो हम चाहेंगे कि इंडस्ट्री की तरफ से भी एक इनपुट आए कि आप लोग, जो कहा गया ना कि ये आपका कमिटमेंट है, ये इंडस्ट्री को आगे बढ़ के इसमें हमें सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो आपकी तरफ से क्या इनपुट मिलेंगे इसमें? Sure. See, हमारा ना एक नेचुरल पुल है टुवर्ड्स अप्रेंटिस। उसका रीजन ये है कि अगर हम किसी यूथ के करियर में शुरू के 2 साल में टाइम इन्वेस्ट कर दें, तो उसकी लाइफ टाइम पूरा जो अगले 10-20 साल का स्पैन है, 30 साल का स्पैन है, उसमें हमें एक हाई क्वालिटी वर्कफोर्स तैयार मिलता है। तो हमारा एक नेचुरल इंसेंटिव है टू इन्वेस्ट इन द ट्रेनिंग ऑफ सच अ पर्सन अर्ली इनफ इन हिज करियर। तो हम तो हमेशा लाइक करेंगे। और हम हमारी जो ऑटो इंडस्ट्री की बड़ी लंबी वैल्यू चेन है, हमारे
सप्लायर्स हैं टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, हम उनको भी एनकरेज करते हैं कि आप और अप्रेंटिस लीजिए, उनको ट्रेन करिए सॉफ्ट स्किल्स में, पर्टिकुलरली डिसिप्लिन और इंडस्ट्रियल सेफ्टी में बहुत ज़्यादा गैप रहता है बिटवीन व्हाट दे लर्न एट स्कूल एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्री। तो वो गैप हम लोग डेफिनेटली ट्रेनिंग में ऐड करते हैं एंड हमारा स्टाइपेंड काफ़ी हेल्दी लेवल पर होता है, तो बिटवीन 15,000 to 17,500 rupees per month for people who work in our institutes, whether in our plants, whether in Haryana or in Gujarat. Plus, we provide them uniform. We provide them, of course, the regular lunch or dinner facility, whatever is required, and medical terms में भी उनका ध्यान रखते हैं। मुझे इंश्योरेंस का ध्यान रखते हैं उनकी, so that God forbid something wrong happens, they are covered. तो मुझे ऐसा लगता है कि MSMEs में थोड़ा सा और इस चीज का अगर प्रोलिफरेशन हो तो और एडवांटेज रहेगा, और हमें एक चीज से डेफिनेटली फायदा होगा अगर हम दूसरे स्टेट से, वी वांट अ वेरी डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स। तो जैसे हमारे ITIs 18 स्टेट्स में हम लोग इंटरवीन कर रहे हैं, तो साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, एक बार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला था कि अगर हम सिर्फ द लेफ्ट साइड ऑफ इंडिया एंड द राइट साइड ऑफ इंडिया वी कनेक्ट द डॉट्स, then it will benefit a lot both for industry and for people. So that data, the national database will also help a lot, जिसमें cross flow of manpower and of industrial opportunities happen. थैंक यू राहुल भारती जी, बहुत अच्छा इनपुट आपने दिया, और मुझे लगता है जो इनिशिएटिव एफर्ट्स आप लोगों की तरफ से हो रहे हैं वो बाकी सभी मेजर इंडस्ट्री जायंट्स को भी एक मैसेज इसकी तरफ से जाएगा, और वो कर भी रहे हैं, और भी ज्यादा आगे बढ़ के जो आज की 23-24 का जो बजट अनाउंसमेंट है कि 47 लाख युवाओं को जो अप्रेंटिस से जोड़ने की जो बात कही है, उसमें इंडस्ट्रीज का सपोर्ट पैरामाउंट है। तो थैंक यू सर। और फिर अगला एक सवाल आ रहा है गोपाल कृष्ण जोशी जी की तरफ से, बॉश बैंगलोर से। गोपाल कृष्ण जोशी जी, आप क्या जुड़े हैं हमसे? गोपाल कृष्ण जोशी जी, आप जुड़े हैं क्या? Yes, yes. Am I audible? Yes, you are perfectly audible. आप अपना can we have question please? Yeah. To the panelists, good afternoon to you all. Let me quickly frame my question. You know that a lot of changes are happening in the business landscape. Man effort is taken over by machine. Digitalization is happening in the country. Under the circumstances, what do you think which we should together, and I say together, industry and apprenticeship board, to make differently in the apprenticeship training in India, which will help Indian youth become competent and employable in the industry? When I say industry, the changes which are happening in the industrial landscape. This is what question, maybe little lengthy, but in precise, under the current changing dynamics, what apprenticeship and industry together should play a role to make people become competent and employable. This is a very nice question with a lot of broad perspective. I would first request Chairman sir, because we have to start from the school itself. So sir, inputs from your side, sir, please. You know, he is absolutely right that things are changing at a much rapid rate today than it was, let's say, 50 years ago. 50 years ago, we could not have predicted what kind of jobs are going to come in next 5 years, 10 years. We could have easily predicted, but today it is not possible because the technological landscape and other processes, they are changing very rapidly. And that's the reason why even the national education policy says that we should not train our students in single disciplines. They should have multidisciplinary knowledge. So the same thing should happen even in the skill education. You should focus on certain skills, but you should also have an open mind and keep learning newer things so that you remain relevant to your present job and also the future opportunities that will arise. So that's the only solution. And in national education policy, we are
doing many things to introduce this kind of the blurring of the disciplinary knowledge so that the students are broadly knowledgeable and they are able to take up any new skills that they are required to acquire. Excellent, sir. Your word that you are blurring the differences so that they are broadly knowledgeable, but then they are equipped to take up the new skills. I think that's a perfect way of response to the question. Vikasji, you were also wanting to contribute, maybe very quickly from your side. Yeah, as a industry, as a global player, as an industry, we can foster it in terms of industry aligned curriculums, industry relevant equipments in the labs, and dual system of training. So and joint certification, that global partnership and collaborations that can be formed, that industry can provide and push to make industry relevant curriculums, labs, training, imparting that, and push in terms of taking this drive, the ongoing benefits and scheme the youth have under the scheme of DBT and all. As an industry, we it's a part of our responsibility. So we can go away with the stipend and the benefits that push, but as a responsible companies, as an industry, we should because it's a win-win situation for a company as well. So we should as an industry, we can foster in bringing collaboration, dual certification. So these are some of the efforts that industry can contribute with under this scheme. Thank you, Dr. Vikas, for again reiterating the fact that industry has to be a major player. Yes, ma'am, I can see your hand being raised. Yes, ma'am. So thanks. I would like to mention, because Mr. Bharti is also here, that Maruti is working in 8 ITIs with us, and they in creating dedicated workshops they have created in Maharashtra, and lot of our apprentices are going to their factory in Gujarat. So, and just now someone from Bosch also intervened. They are also helping with 32 ITIs to make additional workshops with us. We are collaborating with them. But I would like to just emphasize here, since the industry leaders are here, that we are just not looking for, when we talk about industry engagement, it is just not about creating centers of excellence through CSR funding. What we are looking at, good, intense PPP models. And right now my team is meeting many of the business leaders to create better PPP frameworks for industry, ties, and both in terms of upgradation of the infrastructure, but actually partnering in designing the course curriculum as well as management of these. So, and also getting access to the training centers that the industries have for their own employees. So this give and take is very important. This is what I would say, and not just talk in CSR framework alone for industry partnerships. Very valid input, ma'am, because industries do have their own training centers, which is well equipped, and especially this is absolutely in sync with their requirement. So that should become a point of training as well. So now I'm taking the next question. We can see in the chat box Shri Dharma Rakshit ji, head human resources coming from Hero Motor Corp Limited. Dharma Rakshit ji. Hi, good afternoon. Am I audible to everyone? Yes, you are totally audible. So I represent the Hero Motor Corp. We are the world #1 in the manufacture and selling of the motorbike from the last 20 years. Sir, you have mentioned that very clearly that Government of India plans to have the deploy the 47 lakh apprentices in next 3 years. And you already mentioned that a lot of the programs are also being rolled out. Just to inform this thing, we do not charge anything from the government or state government or the Government of India as a remittance what you provide, because we understand the thing, this is our responsibility. Moreover, we provide a lot of the benefits to our apprentices, and our stipend is somewhere between the 15,000 to 20,000. My question is very simple. How you are going to, what are the concrete plans to deploy the 47 lakh apprentices in the next 3 years? What are the expectations out of the industry? What are the expectations out of the youth
who are willing to participate in this vision? I think Dharma Rakshit ji, your question is will kind of whatever we have deliberated, the some substance outcome is what your question is, that what is our clear-cut action plan to take forward the budget announcement. So maybe respected chairman sir, if possibly you can suggest the road ahead, so that would be kind of for everybody to understand. Yes, yes. I think he has brought our attention back to the theme of our entire panel discussion. So how to raise the participation of apprentices from the present levels to 47 lakhs with the DBT support. So one of the things that we need to do is to increase the industry participation. There has to be more consultations with the industry to rope in them. And also we need to create more awareness through webinars, seminars, and even kind of fairs that can be arranged so that among the youth also there is more awareness. And of course, we also need to see that there is a geographical uniformity in terms of the distribution of these apprentices, because often it may happen that in certain locations there is more industrial development, and many apprentices may emerge from those areas, depriving the other geographical locations. So we need to work out on how we can bring some kind of parity among the geographical locations across the country. So this is my brief answer to that. Okay, thanks, sir. Now we move on to the next question, which is coming. Okay, it is coming from one of our field level functionary from Shri Shram Sundar, who is junior apprenticeship advisor coming from Hyderabad. Shri Sham Sundar ji, are you there? Yes, ma'am. Please, you can spell Yes, out your question. Yes, ma'am. Yes, your question, please. माननीय महोदय लोग, मेरा नाम श्याम सुंदर है, प्रणाम। मेरा क्वेश्चन भविष्य के बारे में है। उसके लिए मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। द रोल ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन क्रिएटिंग ए फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स, इसके बारे में मुझे चाहिए। वर्कफोर्स फ्यूचर में कैसा बना सकते हैं, इसके लिए अप्रेंटिसशिप किस तरह उपयोग होगा, आप थोड़ा बताइए सर। ये आप सब लोगों के लिए माल विनती है। ठीक है। Thank you. Okay. Let me answer very briefly to what he has asked. See, if there is a mass level apprenticeship skill enhancement among the youth, that will enhance the aggregate productivity level. And when that happens, we are adding value to our economy. And that will increase the per capita income of individuals. And that will then enhance the per capita wealth of the society. And that will help us to put in more efforts, more funding into skilling larger number of youth. So you can see that one feeds the other and ultimately makes our country a highly inclusively developed country. And that's the role of apprenticeship. Yes, yes, sir, absolutely bang on. And thanks for responding on that question. और आपको आपका जवाब मिल गया होगा श्याम सुंदर जी, और इसके बाद भी हमारे जो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन चलेंगे उसमें हम आपके साथ फिर से चर्चा विचारणा करेंगे। सर, अगर अनुमति हो तो हम एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रीच्ड द स्टेट। उसके बाद सर लास्ट में फिर आपके पास ऑनरेबल चेयरमैन सर हम आएंगे, सो दैट क्विकली हमें रोड अहेड का थोड़ा सा मापदंड मिल जाए। कैन वी हैव द क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैनल डिस्कशन फ्रॉम श्री संदीप पटनायक, Director HR from HAL. Yeah. Good afternoon. I am Sandeep Patnaik. Let me tell you, HAL is one of the oldest and largest aerospace and defense manufacturer in the world. HAL recognizes that apprenticeship training is one of the sources to develop skilled manpower for industrial growth by using the production facilities available in the company to impart the skill.
HL engages more than 3,500 of the total workforce as apprentices. And over the years, HL has been recognized by Honorable Prime Minister for engaging the maximum number of apprentices. And HL has also been awarded by the Ministry of Skill Development for an Kaushal Acharya Award, and Certificate of Appreciation has also been awarded to HL. And HL has also been participated in the pilot project for the NAPS 2. In this context, my question is, what are some of the reforms brought under NAPS 2 to attract youth? Introducing eKYC and PAN GST integration is a welcome step before rolling out DBT. However, what are the steps implemented by the government to make the entire DBT process seamless with little to no disruption? Thank you. Patnaik ji, I think quite a bit was already answered by Rajesh Agarwal ji when he was elaborating. But sir, क्योंकि ये सवाल उठा है तो हम कहेंगे कि थोड़ा सा आप फिर से जरा eKYC, DBT, पैन टैन की जो भी बातें हैं वो बता पाएं जी सर. Thank you, Sonal. And Sandeep ji, as many of the panelists and during the panel discussion, we have seen this entire interface with for apprenticeship is now an online thing, and it is generally a developing process. With every iteration, the things keep on improving faster. So eKYC, GST, PAN, everything integration is a step in that direction where an individual or an establishment will need not have to go back to portal and again for same kind of details. Two, I think, as I already mentioned, there has been a pilot run for more than 6 months where this whole DPD process has already been successfully implemented. And whatever learnings has come out of those 6 months, whatever glitches, whatever loopholes, whatever gaps was found out, they have already been circumvented. They have already been covered in the revised version, which will be rolled out along with this new NAPS program for 47 lakh apprentices over next 3 years. So that will also enable make this whole DBT process seamless. Three, I think to make this entire process work well, the key important areas is how we onboard the MSMEs and how we get on the trainees. I think there is a complete elaborate program of the ministry to have PM melas, national apprenticeship melas across the country. A number of it have been lined up across the country to engage with establishments and also the youth, make them aware about this apprenticeship program, the stipend support under NAPS, and also see how they can seamlessly get integrated on this portal. Similarly, there are advocacy workshops also which are being planned around MSME clusters and industries so that they are more and more made aware and they are onboarded. Because if more and more industry gets onboarded, more and more trainees are made aware and they are also brought in over the apprenticeship portal. Both, I think, the seamless movement of apprenticeship, delivery of apprenticeship training and management will be easy, and our target achievement movement towards the overall target of 47 lakhs also will be easy. Thank you. Thank you, sir. And here we close the question hour session. And though I would feel that some of the panelists possibly the questions were not directed to them, but maybe many questions were related to government or how do we achieve this target of the budget announcement and all. But I think we have had a very insightful and a very enriching contribution from each of the esteemed panelists. And now I will again go back to Honorable Chairman, sir, that if we can have some final inputs, and because we again have to draft a report and submit after a couple of hours. So maybe if we have a way ahead, sir, we can do accordingly. Honorable Professor M. Jagdish Kumar, sir. Right. Sonalji, while I thank all the panelists for their very insightful inputs, on behalf of the entire panel, I also want to thank you for wonderfully conducting this program. Thank you so much, sir. Okay. Right. One thing that came to my mind is while DBT is being tested in a pilot mode, we also had to see that before the stipend is given to the student through DBT process, there could be some bureaucratic processes, paperwork, which needs to be done by the student.
I'll give you one example. In our university system, we use DBT system for scholarship dispersal. But then we found that at the university level, at the student level, they have to get a paper signed by the supervisor, then it will go to the dean, then to the registrar, then it will come to the UGC, and that was causing a lot of delays. So then we changed our portal and made everything, all paperwork related to the scholarship dispersal should be done only on the portal. So this is something that you may have to look into. And also, it may be worthwhile to call maybe 100 apprentices from across the country on an online portal and ask them about the experience of how this DBT is helping them in getting their stipends. So this is one suggestion that I wanted to give you. But of course, there are a couple of things that are main focus of our discussion. One is that how to increase the participation of both the state governments and also the industries in the NAPS too. That is one aspect on which all of us had to do the brainstorming and come up with some strategy on that. And then from the youth perspective, how to make apprenticeship more attractive. There was a question from the audience also that today, all said and done, it is still seen as a kind of secondary option to the students. So how to change that perception? So therefore, this can be done. One way of doing this is involving some of the top institutions themselves in skill education, in apprenticeship kind of work. If IITs and other top universities can be associated with that, perhaps the perception can be changed, and maybe some of you may have some more insights on that. And then we also have to, I think, periodically do studies by a third party to see how this apprenticeship scheme is actually enhancing the opportunities for the youth. And the fourth one I would like to say is that yesterday I had a discussion with Sonalji as a precursor to this. The participation of women in the apprenticeship is a cause for concern, although the numbers are increasing. I think we have a long way to go. One could be the social aspects. The other one is the nature of the apprenticeship itself. It is more considered to be hard apprenticeship. Therefore, we need to expand the apprenticeship opportunities into different areas so that there is a larger participation from the women. And lastly, I think we need to have very focused effort on addressing the concerns of the students who come from the socially and economically deprived groups. So these are my initial thoughts. Thank you so much, sir. We have noted all the points. Just very briefly would say that periodic third-party review we had already initiated for the first version of the scheme, and women participation, as you have rightly, sir. Yesterday also we had the discussion. It is definitely increasing, and because of precisely the optional trade and the flexibility provided to the industry. But yes, lot has to be done, and especially in the MSME sector, especially as the Honorable Prime Minister had said in this speech in the morning, कि जो last mile है, जो खास तौर पे हमारे traditional arts, weavers, especially sectors like tourism, civil aviation, green energy, इन sectors पे सर ने जैसे gift में बताया, services sector, financial sector, ये बड़े upcoming sector है और इस पे हमारा focus रहेगा. So सर अब अगर आपकी अनुमति हो तो हम सभी के लिए हम धन्यवाद सादर करते हैं और सर ऑनरेबल चेयरमैन सर यू हैव बीन अ सोर्स ऑफ इमेंस इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस एंड बहुत कुछ सीखना है आपसे सर और कैसे हम इसमें और भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और एकेडमिक्स को हम जोड़ें जैसा सुबह भी हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि शिक्षा और कौशल इसको साथ में चलना होगा तभी हमें जॉब रेडी युवाओं की टीम हमारी तैयार होगी तो आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहेगा ऑनरेबल चेयरमैन सर ऐसा हमें पूरा इसका विश्वास है एंड ऑल द एस्टीम्ड पैनलिस्ट्स इट वाज अ ग्रेट हैविंग यू थैंक यू राजेश अग्रवाल सर जी थैंक यू राहुल भारती जी थैंक यू इंजेटी श्रीनिवास सर थैंक यू मनीषा वर्मा मैडम थैंक यू डॉक्टर विकास चंद्रा जी एंड थैंक यू श्री आशुतोष गुप्ता जी आप लोग ने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया उसके लिए फिर से आपका धन्यवाद
और साथ में हमारे जो पार्टिसिपेंट्स ने हमसे सवाल पूछा उनके लिए भी बहुत धन्यवाद, और जो टाइम की कमी की वजह से सवाल न पूछ पाए उन्होंने हमें चैट बॉक्स में लिखा भी है, हम उनके जवाब उनसे अलग से भी वेबिनार करके उनके जवाब जरूर देंगे। और पूरे देश में जो युवा हमसे जुड़े हुए थे, जो हमारे ITI के, स्कूल के और इवन कुछ जन शिक्षण संस्थान के भी कुछ हमारे रिप्रेजेंटेटिव जुड़े हुए थे, उनका भी मैं बहुत सादर धन्यवाद करके इस पैनल डिस्कशन को अब बंद करती हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार। One word of thanks and compliments for the excellent moderation across multiple stakeholders. I think Thank all you. panelists would. All of us join you in congratulating and thanking so Joint much. Secretary. Thank you so much, sir. Thank you. Thanks, sir. Thanks.